हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे रिवीजन सीरीज टाइप चल रही है। मैं खुद का रिवीजन कर रहा हूँ, किसी और का नहीं। यू कैन जॉइन मी एज अ पार्टनर फॉर द स्टडी सेशन अबाउट एन आवर। 1 घंटे का स्टडी सेशन रहेगा ये। आपको जितना टारगेट रखना है 1 घंटे का आप रख सकते हो। आप अपना अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। बराबर 10 होगा प्योर आवर 1 घंटे के लिए। मैं बहुत रफली पढ़ूंगा क्योंकि मैंने बहुत रिविजन्स ऑलरेडी किए हैं, तो बहुत सारे समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ रहा है। तो जस्ट रिवीजन, बहुत मैं सिर्फ ये रिवाइज कर रहा हूँ ये सब। आज हमारा टारगेट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एटलीस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा आज। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम क्लास 12। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइव सेशन के दौरान आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर योर क्यूरीज एंड द क्वेश्चन, सो कंसंट्रेट फॉर एन आवर ऑन योर टारगेट राइट नाउ। कितना टारगेट रखोगे आप 1 घंटे के लिए? मेरा टारगेट है एटलीस्ट हाफ चैप्टर, एटलीस्ट कम से कम आधा चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of the biological organization: macromolecular cells, tissues, organs, individual organisms, population, communities, and the ecosystem and the biomes. At any level of biological organization, we can ask two type of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning, why does he sing? The how type questions seek the mechanism behind the process, and the type of the seek the significance of, and the why type of question seek the significance of the process. For the first question is our example, the answer might be in terms of operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during the breeding season. Why you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions. अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, अगर हम देखेंगे हमारे इर्द गिर्द बर्ड्स सुबह सुबह सिंग करते हैं, तो पहली बात है वो क्यों और कैसे सिंग करते हैं। कैसे में आएगा उसका मैकेनिज़्म, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कैसे सिंग करता है। वाई में आएगा उसकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस उनकी नीड होगी टू कम्युनिकेट विद देयर मेट्स ड्यूरिंग द breeding seasons. Why are night blooming flowers generally white? डायरेक्टली क्वेश्चन, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट, ये आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, वाई के तौर पर नहीं आ सकता, जनरली आ सकता है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट, it's just an adaptation. Similarly, cactus have many thorns, it's an adaptation. How does chick recognize her own mother? Ecosystem. You have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among the organism and between the organism and its physical. Ecology is a subject which deals with the study of and as well as between of biotic and the abiotic components of the environment, between the biotic organism, among organisms, and between the organism and its, among the biotic organisms as well as between the biotic and the abiotic components of the ecosystem. Ecology is basically concerned with four levels of biological organization: OPCB. OPCB: organism, population, communities, and the biomes. Organism, population, communities, and the biomes. OPCB. OPCB. OP चार्ट बस्टर कह सकते हैं, OP चार्ट बस्टर। OPCB का मतलब है organism, population, communities, and the biomes. Organism, population, communities, and the biomes. Ecology is a subject which studies the interaction among the organism and between the biotic and the abiotic component of the ecosystem or environment. Organism and its environment. Ecology at the organismic level is essentially the physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment. अगर हम organism level पे ecosystem को study करेंगे, it is basically also called as physiological ecology. Directly question आ सकता है, ecology at the organism level is also called as physiological ecology, which try to understand how organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. इसमें दो terms आती हैं, survival as well as reproduction, physiological. You may have learned in earlier classes how the
rotation of our planet around the sun and the tilt of the axis cause the annual variations in the intensity and the duration of the atmosphere, resulting in the distinct seasons. These variations, together with the annual variation in the precipitation includes both rain as well as snow, account for the formation of the major biomes such as desert, rainforest, and biomes. पहले पढ़ेंगे organism, फिर है population, communities, and the biomes. Organism ecology at the organismic level is essentially the physiological ecology. It's called as the physiological ecology, which deals with the which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. Simple. You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of the axis cause the annual variations in the intensity as well as duration of the temperature. Rotation of the sun as well as tilt of the axis cause annual variation in the intensity in the duration of temperature, resulting जिसकी वजह से different seasons आते हैं. These variations, these seasons, along with the change in precipitation account for the formation of biomes. कहीं पे ज़्यादा precipitation होती है, कहीं पे कम. On the basis of precipitation, कहाँ किस जगह कितनी precipitation होती है, on the basis of the precipitation, on the basis of the temperature, on the basis of season. Simply season क्या होगा, season में आता है temperature, precipitation आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन टेम्परेचर में. उस हिसाब से हमें हमारे पास डिफरेंट बायोम्स होते हैं. डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द बायोम्स. ये डायग्राम यहाँ पे हमें लर्न करना पड़ेगा. यहाँ पे जो ग्राफ है, इट्स बिटवीन द एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर एंड द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के दरमियान जो ग्राफ है यहाँ पे, मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, इसको लर्न करना पड़ेगा. इस ग्राफ को डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहले सबसे छोटा है डेजर्ट, ऊपर पहले डेजर्ट से शुरुआत, फिर है ग्रासलैंड, पहले डेजर्ट फिर है ग्रासलैंड, उसके बाद है यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे एक्ट कर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके यहाँ से है फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ से इनको सबको मिला के है टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट इट इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट. और नीचे है टुंड्रा, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्टिक एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. पहले आता है स्मॉल डेजर्ट, उसके बाद है ग्रासलैंड, उसके बाद है यहाँ से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नीचे से है कॉनिफरस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बीच में है, सबको मिला के है टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट नीचे है आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर, एनुअल मीन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एनुअल मीन टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन. डेजर्ट, ग्रासलैंड, उसके बाद है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद है नीचे टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर कॉनिफरस एंड आर्टिक. रीजनल एंड द लोकल वेरिएशंस विद ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. एक पर्टिकुलर बायोम में जब रीजनल लोकल वेरिएशंस आते हैं, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर बायोम में बहुत सारे हैबिटेट्स बनते हैं. मेजर बायोम्स ऑफ द इंडिया आर शोन द फिगर. ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट एज अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स. स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट्स, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, snow-laden polar regions, high mountain tops, thermal springs, and the stinking composites. That means life not only exists in favorable habitats, but also exists in the extreme and the harsh habitats. Life does not only exist in the favorable habitats, but even in the extreme and the harsh habitats like scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, snow-laden polar regions, high mountain tops, thermal springs, and stinging composite pits. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. एक क्वेश्चन आ सकता है, intestine, our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes, even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. Even our intestine is a unique habitat for the hundreds of species of microbes, and local variations within each regional and local variation within each biome lead to the formation of different habitats, variety of habitat. Not landed life or not only exists simple. पहले आता है डेजर्ट, फिर ग्रास, यहाँ से फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके जो नीचे अपोजिट है कॉनिफरस फॉरेस्ट, इनको मिला के सबको है टेम्परेट फॉरेस्ट, नीचे आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. सिंपल है. प्रेसिपिटेशन और डिफरेंट प्रेसिपिटेशन और ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर, सिंपली डिस्टिंक्ट सीजन और प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं बायोम्स बनते हैं. मेनली है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मेनली है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. ओपीसीबी का मतलब है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. और ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स आर द 4 levels of the biological organization of ecology.
What are the key elements that led to so much variation in the physical and the chemical conditions? What are the key variations जिसकी वजह से इतनी variations आती है? What are the key elements that led to the so much variation in the physical and the chemical conditions of the different habitats? The most important ones are temperature, water, light, and the soil. These are the most important factors या key elements that led to जिसकी वजह से एक particular habitat में इतनी वेरिएशन आती है both in the physical as well as in chemical condition. Temperature, water, light, and soil. Temperature, water, light, and soil. We must remember that the physiochemical, that is abiotic physiochemical components alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes the biotic. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आता है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट में मेजर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आते हैं. दीज आर टेम्परेचर लाइट है, सॉइल है. टेम्परेचर लाइट सॉइल एंड वाटर. टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल. इसके अलावा उनमें आते हैं कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स जिनमें पैथोजेंस आएंगे, पैरासाइट्स आएंगे, प्रेडेटर्स आएंगे, कॉम्पिटिटर्स आएंगे. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और पॉपुलेशन की इंटरेक्शन एक तो आपस में और एक एंड विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें मेनली आता है टेम्परेचर, आता है वाटर, आता है सॉइल आता है एंड टेम्परेचर वाटर सॉइल एंड लाइट. एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं पैथोजेंस, पैरासाइट्स आते हैं, प्रेडेटर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली. वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्वड एडेप्टेशंस टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल. हमको पता है विद द पीरियड ऑफ टाइम जो ये ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं. इट हैज इवॉल्वड इटसेल्फ, खुद को इवॉल्व करता है ताकि ये खुद को अडेप्ट करे इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट, ताकि ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स और एक पर्टिकुलर हैबिटेट के जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसके साथ अच्छे से कोरिलेट करेगा organism through natural selection. We assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has invariably defined range of conditions that can tolerate diversity in the resources it utilizes and a distinct role in the ऑल दिस टुगेदर कंपेरिजन. हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक डिफरेंट रेंज ऑफ कंडीशंस होते हैं जिन कंडीशंस में वो टॉलरेट कर सकता है. अगर एक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की एग्जांपल लेंगे, अगर फॉर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट की टेम्परेचर रेंज होगी कुछ. अगर उस टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएगा. वो फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंडीशंस होती है, एक डाइवर्सिटी होती है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. इन तीनों को आपस में निश कहते हैं. निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स कंडीशंस, एक रेंज ऑफ कंडीशंस जो टॉलरेट कर सकता है. द सेकंड पॉइंट इज डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्स जो वो यूटिलाइज करता है. एंड द थर्ड वन इज द फंक्शनल रोल जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रोल अदा करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम में रोल अदा करता है, उसको हम निश करते हैं. ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज. निश में आते हैं तीन चीज़ें. एक तो आता है रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट, सेकंड वन इज डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड द थर्ड वन इज द फंक्शनल रोल इन अ पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सिस्टम. तीन चीज़ें आती हैं इस पर्टिकुलर निश में. पहली बात जो हमारे जो की एलिमेंट्स हैं, की एलिमेंट्स में आते हैं एबायोटिक भी. एबायोटिक कंपोनेंट्स मेनली आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड द सॉइल. इसके बरक्स आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स भी पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. Each one has invariably different advantage of conditions that it can tolerate. The second is diversity of the resource it utilizes, and the third is distinct functional role in the ecosystem. All this compressed together in major abiotic. अब कुछ abiotic factors के मतलब हम पढ़ेंगे जो एक particular इकोसिस्टम बनाते हैं इकट्ठे. abiotic factors. Temperature is the most important ecological relevant environmental factor. Most important environmental factor. You may be aware that the average temperature on the land varies seasonally. Decrease अगर हम पोल से प्लेन्स की तरफ जाएंगे या प्लेन से पोल्स की तरफ जाएंगे. डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम द इक्वेटर. अगर हम इक्वेटर की पोल्स की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. और अगर हम प्लेन्स के माउंटेन टॉप्स towards the poles and from the plains to mountain tops. It ranges from, अगर हम प्लेन से माउंटेन टॉप जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इसी तरह अगर हम इक्वेटर से मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एंड प्लेन्स टू द माउंटेन्स. इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो इन पोलर एरियाज में जीरो से कम होता है एंड हाई आल्टीट्यूड्स पे ग्रेटर देन 50 डिग्री होता है लाइक ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में. को टेम्परेचर रेंज बहुत होती है. इट कैन बिलो जीरो भी होता है, ग्रेटर देन 50 भी होता है. इवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी जाता है जिनको हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वहाँ पे टेम्परेचर एक्सीड करता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब इस टेम्परेचर की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे बहुत असर पड़ता है. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर नीड, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हुआ होता है.
फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे याद रखना है टेम्परेचर डिक्रीज एज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड प्लेन्स टू माउंटेन्स इट कैन सब जीरो पोलर एरियाज में सब जीरो जीरो से कम होता है, हाई आल्टीट्यूड्स पे ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इवन एंड डीप्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर ग्रेटर देन 100, देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ टेम्परेचर। हमारे अर्थ पे टेम्परेचर जीरो से कम भी हो सकता है और 100 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और पोलर एरियाज जहाँ पे जीरो से कम टेम्परेचर होता है वहाँ भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। Temperature is the most important factor here, where the average temperature on the very scene decreases progressively as you move towards the poles and from plains to mountains drops to sub-zero in the polar areas, higher to the greater 50 degrees Celsius around deep sea hydrothermal vents में आता है greater than 100 degrees Celsius. It is general knowledge that the mango tree do not and cannot grow. Mango tree do not. अब कैसे होगा effect? इस टेम्परेचर डिफरेंस, इस टेम्परेचर वेरिएबिलिटी की वजह से एक पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने एग्जांपल दी है मैंगो ट्री की। मैंगो ट्री इज़ नॉट फाउंड इन द टेम्परेट कंट्रीज़ लाइक कनाडा एंड जर्मनी। ये यहाँ पे क्रक्स निकाल के बाहर लिखा है मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स। कनाडा एंड जर्मनी हैं टेम्परेट कंट्रीज़, वहाँ पे मैंगो ट्री नहीं पाया जाता है क्योंकि मैंगो ट्री के लिए टेम्परेचर रेंज कुछ डिफरेंट है और कनाडा में और जर्मनी में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। मैंगो ट्री is not found in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest. Snow leopards Kerala forests में नहीं पाए जाते हैं. And tuna fish is not found beyond tropical latitudes in the oceans. Ocean में tropical latitude से उधर tuna fish नहीं पाए. तीन चीज़ें याद रखने. First one is mango plant is not found in the temperate countries like Canada and Germany. The second one is snow leopards are not found in the Kerala forest. Snow leopards are not found in the Kerala forest. And the third one is tuna fish is not found beyond the tropical latitudes of oceans. Mango tree, second one is snow leopards are not found in the Kerala forest, and the third one is tuna fish are not found in the beyond tropical layers of ocean. Temperate mango fish temperature. इसमें आते हैं फिर दो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम इराइथर्मल कहते हैं। जो एक रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर को रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर उनको हम स्टीनोथर्मल भी कहते हैं। सिंपल है। टेम्परेचर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म के काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होती है। A few organisms can tolerate a thrive environment called thermal restorative temperature called stenothermal. The levels of the thermal tolerance of the different species determine to a large extent their geographical distribution. The level of thermal tolerance कितना tolerate करेंगे उस हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। जितना वो ज़्यादा टॉलरेट करेंगे उतना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा होगी। द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिपेंड्स determines to a large extent their geographical distribution. In recent years, there has been a growing concern about the gradually global warming की बात करते हैं। Second important factor is temperature. Temperature के बारे में हमने पढ़ा temperature is the most relevant factor. The temperature ranges from zero सब जीरो होता है polar areas में, latitudes high latitudes पे greater than 50 डिग्री सेल्सियस होता है, in tropical deserts hydrothermal vents और thermal springs में greater than 100 डिग्री सेल्सियस होता है। Temperature decrease होता है as we move from equator towards the poles and from plains to the mountain tops। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री कैनॉट इज नॉट फाउंड इन द टेम्परेट कंट्रीज लाइक द कनाडा एंड जर्मनी। सेकंड वन स्नो लिपोर्ट इज नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड द थर्ड वन इज टूना फिश इज नॉट फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल latitudes ऑफ द ओशन। उसके बाद हमने पढ़ा स्टीनोथर्मल रिस्ट्रिक्टेड एंड द इराइथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। सेकंड वन इज water is another the most important factor influencing the life of the organism. In fact life on earth originated in water। evolution में पढ़ा है the first life originated जो हुई थी वो हुई थी water में। in fact life on earth first originated in water and is unsustainable without water। Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there। the productivity and the distribution of the plants is heavily dependent on the water। productivity कितना प्रोड्यूस, क्योंकि वाटर एक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, देयरफॉर प्रोडक्टिविटी एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन एडेप्टेशन। अवेलेबिलिटी कितना वाटर ज़रूरत है, किसी को कम वाटर ज़रूरत होता है किसी को ज़्यादा वाटर, उसी के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। यू माइट थिंक दैट द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ओशंस lakes and the rivers should not face any water related problems, but it is not true। for aquatic organism quality of the water becomes more important। quality में आता है chemical composition, pH of water, salinity of water। for example for aquatic organisms the quality of the water, अगर हम सोचेंगे कि जो पानी में रहते हैं
इनके लिए कभी भी वाटर किल्लत नहीं होगी, लेकिन उनके लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर मैटर नहीं करता, उनके लिए क्वालिटी ऑफ वाटर लाइक पीएच कंपोजिशन ऑफ द वाटर का पीएच कंपोजिशन ऑफ द वाटर एज वेल एज सैलिनिटी ऑफ वाटर से इम्पैक्ट पड़ता है उनकी एडेप्टेशन पे. फॉर एग्जांपल द साल्ट कंसंट्रेशन इनलैंड द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड इज लेस देन 5 इनलैंड में होता है साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द इनलैंड होता है लेस देन 5 30 to 35 होता है सी इन ग्रेटर देन 100 इन हाइपर सैलाइन लोग ये 3 पॉइंट्स याद रखना है यहाँ पे सैलिनिटी के रिलेटेड. सैलिनिटी इन द salt of the inland water होता है less than 5 salt of the inland water 30 to 35 in the sea and greater than 100 in hypersaline organisms. यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं eryhaline and the stenohaline. Eryhaline 5 in the inland waters, 30 to 35 in the sea, and greater than 100 in the hypersaline lagoons. Some organisms are divided into concern restricted उनको हम stenohaline कहते हैं. Fresh water animals नहीं रह सकता in the fresh water animals cannot live for long in the sea water, vice versa, because of the osmotic problems they would face 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 because of the osmotic problems they would face. एक फ्रेश वाटर प्लांट या एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, एक फ्रेश वाटर फिश या फिर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म या एनिमल एक साल्ट वाटर में नहीं रह सकता फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम. वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन याद रखना. एरोहालाइन या स्टीनोहालाइन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वाटर इनफैक्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड अर्थ पे लाइफ ऑरिजिनेट हुई थी वाटर में. द वाटर the productivity as well as distribution of water is largely dependent on the water. Distribution of plants largely dependent on the water. Organisms like for the aquatic organisms the quality of the water becomes more important like pH. For example salt concentration different water की different होती है. For example inland water की concentration होती है greater than 5. sea water की concentration होती है 30 to 35 and in greater than 100 होता है for the hypersaline lagoons. एक fresh water organism नहीं रह सकता in the marine in the sea water for a long time because of the osmotic problems it would face. The third one is light. Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight a process which is only possible when the sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of the light for living organisms, particularly autotrophs. Many species of the small plants, herbs, and the shrubs growing in the forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by the tall canopy trees. Many plants are also dependent on the sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and the seasonal variations in the light intensity and the duration photoperiod as cues for timing their foraging, reproductive, and the migratory foraging, reproductive, and the migratory foraging, reproductive, and migratory. Since plant याद रखना है यहाँ पे ये याद रखना है photoperiodic movement. Many plants also depend on the sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and the seasonal variations in light intensity and the duration photoperiod as cues for timing. उनको light की diurnal seasonal variation और intensity और duration कितनी देर तक light है as clues है as cues for the foraging, reproductive, and the migratory activities. The availability of the light on the land is closely linked with that of the temperature since the sun is the source of both. यहाँ पे एक बहुत important sentence है. The availability of the light on land is closely related with temperature because sun is the source of both. The availability of the light on land is closely linked with that of the temperature since the sun is the sun for both. But deep greater than 500 meters in the oceans, the environment is dark and the inhabitants are not aware about the existence of the celestial source of energy called the sun. What is then is their source of energy. The spectral quality of the solar radiation is also important for life. Spectral quality, UV component, visible component, infrared component also determines the quality of the light. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms while not all the colorful components of the visible spectrum. Colorful components लाइट इंटेंसिटी एनिमल्स करते हैं यूज़ लाइट इंटेंसिटी या डायरेक्शनल वेरिएशन सीजनल वेरिएशन लाइट इंटेंसिटी में होती है या फोटो पीरियड कितने तक लाइट होगी एज क्यूज फॉर एजिंग रिप्रोडक्टिव एंड द माइग्रेटरी माइग्रेटरी टाइम एक्टिविटीज are available for marine habitats. Deep marine habitats living at different depths of the ocean. रेड ग्रीन एंड द ब्राउन विच आर द डीपेस्ट algae होते हैं. रेड algae होते हैं डीपेस्ट वो सरफेस पे भी पाए जाते हैं डीप में भी पाए जाते हैं. रेड algae डीप में. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना. क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द लाइट फोटो पीरियड कितनी देर तक लाइट होगी उस वजह से एनिमल्स करते हैं यूज़ इसको एज अक्यूज. द डायन एंड द सीजनल लाइट एंड द ड्यूरेशन
cues for timing of foraging, reproductive, and the migratory activities. The availability of the light on the land is closely linked with that of temperature, since the sun is the source of both. The availability of the light on land is closely linked with that of temperature, since the sun is the source is closely linked with temperature, since the sun is the source of both the light as well as the temperature. Sun is the source of both the light as well as the temperature. The UV component of the spectrum is harmful to the or many organisms, while not all the components of the spectrum. Red algae of the deepest algae soil. The nature and the properties of the soil in different places vary. It is dependent on the climate. It is dependent on the climate, weathering process, whether the soil is transported or sedimentary. The nature and properties of soil varies. It depends upon the two factors: the climate. The second one is the weathering process. The nature and the properties of the soil varies in different places. It depends on the two factors. The first one is climate and the second one is weathering process, whether it is transported, whether it is sedimentary. एक जगह है तो या तो transport की हुई soil है. And how soil development occurred. Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and the aggregation, determine the percolation and the water holding capacity of the soil. Determine the percolation and the water holding. बहुत से factors है, characteristics होते हैं soil में, like soil composition क्या है, grain size क्या है, particle size क्या है या grain size क्या है, and aggregation, grain size, soil composition, grain size and aggregation. Determine the percolation, and percolation कितना percolate, water holding capacity कितना percolate, कितना seep down होगा water through the soil, या कितना soil water hold करेगा. Determine the two factors, percolation and the water holding capacity of the soil. These characteristics along with the parameter, these characteristics like percolation, water holding capacity, pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation of any area. एक particular area की vegetation क्या होगी, ये depend करेगी उस soil की characteristics क्या होगी, उस soil की grain size, उस soil की composition, उस soil की aggregation क्या होगी, जिसकी वजह से determine होगा percolation and the water holding capacity. These along with the pH and the mineral composition and the topography determine the to a large extent the vegetation in an area. This in turn dictates the type of animals that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic that can survive. Aquatic में होता है sediment characteristics. Sediment often determine the type of the benthic animals that can thrive there. Often determine the type of the benthic animals that can thrive. Often determine the type of the benthic animals that can thrive there. The soil, the nature and the properties of the soil in different places vary. It is dependent on the climate and the weathering process, whether the soil is transported or it is sedimentary, and how soil development occurs. Various characteristics of the soil, like the soil composition, grain size, and aggregation, determine the percolation and the water holding capacity of the soil. These characteristics, along with the other component constants of the soil, other features of the soil, like the pH, like the soil composition, and topography, determine to a large extent the vegetation determine करता है. Aquatic organism में sediment composition determine करता है benthic animals कैसे होंगे जो होंगे. Percolation and the water holding capacity of the soil composition, soil grain size, and the aggregation determine the percolation water holding capacity. These features, along with the pH, mineral composition, and the topography, determine to a large extent the vegetation in an area. Determine large extent the vegetation in an area. Soil, ये सारे factors हमने complete किए यहाँ पे. Water, inland water की salinity क्या होती है, less than 5 होते हैं. Inland water salinity, the sea की होती है 30 to 35. Mango tree cannot be found in the temperate regions like Canada and Germany. Similarly, the second one is snow leopards are not from the Kerala. For the third one, tuna fish is not found beyond the tropical latitudes of the ocean. Animals करते हैं use diurnal and the seasonal variation in the light, diurnal seasonal variation in the light intensity, photoperiodism को use करते हैं as cues for the foraging, reproductive and the migratory activities. सर सबसे जो deep होते हैं algae होते हैं, रेड algae. Soil में फिर nature and properties of soil different places vary, depends on climate and the weather process, whether the soil is sedimentary or transported, and the how soil development occurred. Various characteristics of the soil, like the soil composition, grain size, aggregation, determine the percolation and the water holding capacity of the soil, which in turn determines the vegetation, which in turn determines the vegetation of that particular area. Response, अब हमने abiotic factors पढ़े क्या क्या होते हैं. टेम्परेचर पढ़ा, फिर वाटर पढ़ा, उसके बाद पहले पढ़ा हमने टेम्परेचर, उसके बाद वाटर, फिर लाइट और उसके बाद सॉइल. दीज फैक्टर्स को अब कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेगा. रेस्पॉन्ड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दो, या तो वो जैसे बाहर होगा वैसे ही अंदर होगा. उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको, जैसे बाहर होगा वैसे ही अंदर हो, उसको कहते हैं कॉन्फर्मर. वो करता है अपने आप को सेट
जैसे बाहर टेम्परेचर या जैसे बाहर होगी आयनिक कंसनट्रेशन, वैसे अंदर भी होगी, उसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर। हम हमारी एग्जांपल हम होम्योस्टेसिस करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, एट ए कांस्टेंट रहता है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारी इंटरनल ऑस्मोरेगुलेशन, हमारी इंटरनल आयनिक कंसनट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहती है। हम कहते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर होते हैं बाहर कोई भी चेंज हो अपने कंडीशंस में, इंटरनल कंडीशंस अगर हम कांस्टेंट रखेंगे उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स होते हैं रेगुलेटर्स, वो करते हैं, एक प्रोसेस होती है उनमें जैसे कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर कंडीशंस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू रखें। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज होगा उसको कहते हैं हम कन्फर्मर। कन्फर्मर वो कन्फर्म मतलब चेंज होता है। Conformer means when the internal and the external environment change simultaneously. Having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, now ask how do the organisms living in such habitats cope with the stressful. But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms for all. One would expect that during the course of millions of the years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body and the permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with the maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Overall enhance of the species both important. All the biological internal a constant internal environment like within the body that permits all the biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Maximum efficiency जब हम हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू रखते हैं, उसको ज़्यादा ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है और हमारी ओवरऑल फिटनेस एनहेंस हो जाती है. दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जांपल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर और द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आइडियली देन called constancy process called homeostasis, but despite varying external environment conditions that tend to upset its homeostasis. Let's know the analogy to calculate. बाहर होगा 25 डिग्री, कुछ एग्जांपल्स दिए. अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा हम स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग होती है हमारी. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्वेटिंग से कूलिंग आती है तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रेगुलेट होता है. इसीलिए अगर बाहर होगी ठंड तो हम शिवर करते हैं विंटर में, शिवर की वजह से हमारा टेम्परेचर रेज हो जाता है. वो बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, हम खुद को एक होम्योस्टेसिस की मदद से एक इंटरनल कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फिजियोकेमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनहेंस होती है फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस एनहेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल फिटनेस एनहेंस हो जाती है. Related constant internal within the body environment that permits all the biochemical reactions and the physiological functions to proceed with the maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature or the osmotic concentration of the body fluids. Ideally, then the organ homeostasis, which example is the person homeostasis accomplished not through the physiological but by artificial means. Let's take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best with the temperature is 35 to 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorching hot or freezingly cold outside. It could be achieved at home in the car while traveling or at workplace by air conditioning in the summer and heater in the winter. This is high performance would be always maximal regardless of the weather around it. Here the person's homeostasis accomplished not through the physiological but through artificial means. How do other living organisms cope with the आर्टिफिशियल मीन्स की वजह से एक पर्टिकुलरली ह्यूमन आर्टिफिशियल मीन्स की वजह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं. होम्योस्टेसिस हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गन कोप विद द सिचुएशन. लेट अस लुक एट द वेरियस पॉसिबिलिटीज. पहले आते हैं रेगुलेट में आता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट कह सकते हैं. बॉडी एनवायरनमेंट में आता है बॉडी टेम्परेचर भी आएगा, इसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नली क्या होगा उसको हम रेगुलेटर कहते हैं. इसमें होम्योस्टेसिस आते हैं, हम आते हैं, मैमल्स आते हैं. जो होम्योस्टेसिस इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, एनर्जेटिकली इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं उस एनर्जी को, इसीलिए होम्योस्टेसिस हायर ऑर्गेनिज्म ही पाई जाती है डेफिनेटली. और होम्योस्टेसिस की वजह से हमारी जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल फिटनेस है वो एनहेंस हो जाती है. रेगुलेशन सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियरल. आगे पढ़ेंगे बिहेवियरल मीन्स की वजह से हम होम्योस्टेसिस अचीव कर सकते हैं. बिहेवियरल मीन्स की वजह से हम होम्योस्टेसिस को अचीव कर सकते हैं. बिहेवियरल मीन्स की वजह से हम होम्योस्टेसिस को अचीव कर सकते हैं.
Sometimes behavioral means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals, खाली birds and mammals भी हम जिसको हम warm blooded animals कहते हैं, all birds and animals are, and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation and the osmoregulation. Evolutionary biologists believe that success of animals या success of mammals जो होती है, it is largely due to this process, that is homeostasis की वजह से जो mammals है वो इतने successful हैं अभी. The success of the mammals is largely due to this ability to maintain as constant body temperature and thrive with the entire course. The mechanism used by most mammals is to regulate body temperature is similar to the ones we humans. We maintain a constant temperature of 37. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profuse. The resulting evaporative cooling is similar to that आगे बोला हमने. When the temperature goes, we shiver. एक्सरसाइज है रेगुलेशन में होम्योस्टेसिस होती है, हमारा इंटरनल फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन भी होती है, और ऑस्मो रेगुलेशन हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, और हमारा इंटरनल जो ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो भी रहती है कांस्टेंट. और थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन बर्ड्स एंड मैमल्स में पाए जाते हैं, और कुछ लोअर इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स, लोअर इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स, कुछ लोअर इनवर्टेब्रेट्स, लेकिन मेनली बर्ड्स एंड मैमल्स डेफिनेट. कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब है जो बाहर वो अंदर ही, जो बाहर होगा वो अंदर, जो बाहर अंदर. हमारे इकोसिस्टम में जो मेजॉरिटी होते हैं वो कन्फर्मर्स ही होते हैं. एंड ओवरऑल मेजॉरिटी 99% ऑफ द एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैनॉट, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स में 99% और सारे प्लांट्स कैनॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं. वहाँ क्या होता है, cannot maintain internal body temperature. 99% of the animals and almost all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid is changed with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and the plants are simply conformers. ये confirm करते हैं, जो बाहर होगा वो अंदर हो. Conformers majority में conformers ही हो, almost 99% of the animals and almost all plants जो होते हैं वो conformers ही होते हैं. अगर हम बोले हमारे पास organism इतने हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा होंगे conformers ही. Considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask this: why these conformers had not evolved to become regulators? Recall the human analogy. Thermoregulation is an energetically expensive process for many organisms. This is particularly true for the small animals like the shrews and the animals. जो small animals होते हैं वहाँ पे surface area ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से heat loss through the surface ज़्यादा होता है. They cannot afford energy for thermoregulation. इसीलिए जो छोटे animals होते हैं, hummingbirds, shrews होते हैं, उनमें thermoregulation नहीं पाई जाती, because thermoregulation is an energetically thermoregulation is an energetically expensive for many organisms, particularly lower organism. Heat loss is a function of surface area. Lower organism को surface area बहुत ज़्यादा होता है. Lower organism, small or like hummingbird, shrews का surface area ज़्यादा होता है, उनमें heat loss through the body surface ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या these afford नहीं कर सकते हैं extra energy for thermoregulation. Heat loss of the heat gain is a function of the surface area. Small animals like the have larger surface area due to their volume. They tend to lose the body very fast when it's cold outside. When they expand, this is the main reason why small animals are rarely found in the polar regions. Small animals are very rarely found in the polar regions. Heat loss ज़्यादा होती है. During the course of the small animals are rarely फाउंड इन पोलर रीजन्स, क्योंकि वहाँ उनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है. पोलर रीजन्स में हमें हीट चाहिए होगी ज़्यादा, उनमें हीट लॉस ज़्यादा हो, इसलिए स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड इन द पोलर. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन द कॉस्ट्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ constant internal are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but even limited range not beyond the simply they conform. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. इनको पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं. कुछ टाइम के लिए रेगुलेट करते हैं, कुछ टाइम के लिए कन्फर्म होते हैं. इनको पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं. कन्फर्म्स आए मेजॉरिटी 99% ऑफ द एनिमल्स आर नियरली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स simply confirm. Regulation में होम्योस्टेसिस में lower organisms cannot afford energy for confirmation for regulation. माइग्रेट, माइग्रेट में क्या हम एस्केप करते हैं स्पेस, जगह को एस्केप करते हैं. इसको एस्केप इन स्पेस भी कहा जा सकता है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक अनफेवरेबल कंडीशन से एस्केप होकर एक फेवरेबल कंडीशंस में होस्टाइल कंडीशन में जाएंगे, उसको माइग्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखिए एग्जांपल, क्योलाडो नेशनल पार्क इन भारतपुर. विंटर, एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क विच इज प्रेजेंट इन भारत इन राजस्थान. क्योलाडो नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन Bharatpur in Rajasthan hosts to thousands of the migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. The organisms can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over. The human analogy, this strategy is like a person simply Kyolado National Park.
Security Park, Bharatpur, Rajasthan hosts thousands of the migratory birds from the Siberia and other extremely northern regions. Example: migration is an example of escape in space. Migration is an example of escape in space. Suspend होता है एक पर्टिकुलर टाइम को एस्केप करना, उस टाइम के लिए खुद को एक सस्पेंड करना, एक डोरमेंट स्टेज में जाना, स्टेज, इसको कहते हैं एस्केप इन टाइम। सस्पेंड को कह सकते हैं एस्केप इन टाइम, माइग्रेट को कहेंगे एस्केप इन स्पेस। सस्पेंड को कहेंगे एस्केप इन टाइम। Suspend in bacteria, fungi, and the lower plants. Various kinds of thick-walled spores are formed, which helps them to survive under unfavorable conditions. They germinate on the elevate of the stool and are in higher plant seeds, and some other vegetative reproductive structures serve as the means to tide over the periods of the stress behind, besides helps in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activity and a state of dormancy. In animals, the organism, if unable to migrate, if unable to migrate, so first preference goes to migration, and then if unable to migrate, it goes to by escaping in time into hibernation, या एस्टिवेशन, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप रेस्पेक्टिवली। जूम प्लैंक्टन्स में एक सस्पेंडेड स्टेट आता है जिसको हम डायापाज कहते हैं। सस्पेंडेड डेवलपमेंट होती है वहाँ पे, डायापाज द सस्पेंडेड स्टेज इन जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन सस्पेंड होता है, बैक्टीरिया फंगा में सस्पेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ डोमेंसी में जाते हैं। डोमेंसी में वो उनकी जो मेटाबॉलिज्म वो डिक्रीज हो जाती है। थिक वॉल्ड स्पोर्स करते हैं उनको हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। सस्पेंड को सिंपली कहते हैं हम एस्केप इन टाइम। जू प्लैंक्टन्स में एक सस्पेंड स्टेट होता है जिसको हम डायपास कहते हैं। हाइबरनेशन होता है एक सस्पेंड स्टेट, हाइबरनेशन को कहते हैं विंटर स्लीप, एस्टिवेशन को कहेंगे हम समर स्लीप रेस्पेक्टिवली। एडेप्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखते हैं कितना होगा ख़त्म। Adaptation is an attribute, actually it's an attribute of an organism towards the environment, towards the habitat, attribute of an organism towards the habitat that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Simple. While considering the various alternative available to organisms for coping with the extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through the certain physiological adjustments, while others are so do behaviorally migratory temporarily to less stressful habitat. These responses are also actually their adaptations. These responses are also actually their adaptations. Migration is an adaptation. Suspend, it's an adaptation. Conformation is an adaptation. Regulation is an adaptation. Partial regulation is also an adaptation. Adaptation is any attribute of the organism. It can be morphological change, for example कैक्टस में morphologically होती है। फिजियोलॉजिकल में आ सकता है, केमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज बिहेवियरल डेजर्ट लीजन में बिहेवियरल एडेप्टेशन पाई जाती है। इट्स एन आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ 2021 मैच द फॉलोइंग आया था बिहेवियरल दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Adaptation is any attribute of an organism. It can be morphological, it can be physiological, it can be behavioral. Morphological, it can be physiological, it can be behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time. They are generally genetically fixed. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of any external source of water, the kangaroo rat in North American deserts it is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is produced as byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that the minimal amount of volume of water is used to remove the excretory products. Kangaroo rat की example दीजिए। Kangaroo rat is found in North America. Kangaroo rat in North America इसमें होती है internal fat oxidation, जिसमें एक water प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन को फिजियोलॉजिकल, इट्स कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकली अडेप्ट हुआ है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से वाटर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट और उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अपने यूरिन को भी इतना कंसनट्रेट करता है ताकि कम से कम वाटर लगे फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कैंगारू रैट इन द यूरिन, it also has the ability to concentrate its urine so that the minimum amount of water. Kangaroo rat in the North America is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation. ये बाहर से water नहीं लेता है, internal fat oxidation में ही water बनता है as a byproduct. Also has the ability to concentrate its urine so that the minimal amount of water is used. Many desert plants have thick cuticle. Thick cuticle में आता है morphological. It is a morphological adaptation. Many desert plants have the thick cuticle on their leaf surfaces and has stomata sunken
टू मिनिमाइज वाटर लॉस, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, एरिड रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो लीव्स होते हैं, उनमें लीव्स के लिए ऊपर थिक क्यूटिकल होता है ऑन द लीव सरफेस, एंड स्टोमेटा भी संकन होता है, जिसकी वजह से उनमें वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है. दे आल्सो हैव स्पेशल फोटोसिंथेसिस क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है दैट एनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोजर ड्यूरिंग द डे टाइम, जिसकी वजह से उनका स्टोमेटा रहता है क्लोजर ड्यूरिंग द डे टाइम. समडी डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया. यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में जो एरिड रीजन या डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव सरफेस पे होता है थिक क्यूटिकल और स्टोमेटा संकन होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा. इसके अलावा उनमें पाया जाता है एक मैकेनिज्म जिसको CAM पाथवे या क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टोमेटा रहता है क्लोजर ड्यूरिंग द डे टाइम और ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है. इसके अलावा सम अदर प्लांट्स लाइक ओपनशिया डेजर्ट प्लांट्स है हैव नो लीव्स, उनके पास लीव ही नहीं होता है. दे हैव रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स, उनमें लीव की जगह स्पाइन्स होते हैं. एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेनेड स्टेम्स. फोटोसिंथेसिस इज टेकन बाय द फ्लैटेनेड फ्लशी स्टेम्स. फ्लश इज एन एडेप्टेशन ऑफ स्टेम. ओपनशिया एंड यूफोरबिया हैज स्ट्रक्चर्स फ्लशी स्टेम्स होते हैं, उनमें एडेप्टेशन ऑफ स्टेम. ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ते हैं हम मॉर्फोलॉजी में. ओपनशिया एंड यूफोरबिया वहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पर देखेंगे हम ओपन शेड जो डेजर्ट प्लांट है उसमें कोई लीफ पाया नहीं जाता है. लीफ के बगैर उस लीफ के बदले उनमें स्पाइन्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस करता है इनमें फ्लैटेनेड स्टम. Adaptation is an attribute of the, or it can be morphological, it can be physiological, it can be behavioral. It can be morphological, it can be physiological, it can be behavioral. That enables the organ to survive and reproduce an organ. Many adaptations have evolved over a evolutionary time and are genetically fixed. Adaptations are genetically fixed. It is an important point. Kangaroo rat in the North America desert is capable of meeting all its water requirements for the internal fat oxidation in water is produced by product. Many desert plants have the thick cuticle. Desert plants के पास होता है thick cuticle on the leaf surface and the stomata होता है sunken to minimize the water loss through transpiration. They also have the special protein called as CAM pathway, जिसकी वजह से स्टोमेटा रहता है remain closed during the day time. ओपनशिया में लीव्स नहीं होते हैं, उनके बदले होते हैं स्पाइनस और फोटोसिंथेसिस फंक्शन होती है बाय द फ्लैटेंड स्टेम. फ्लशी होते हैं फ्लैटेंड स्टेम. फोटोसिंथेसिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स. These were the morphological adaptation जो थी. इसके मैमल्स में अगर हम पढ़ेंगे हम एनिमल्स में क्या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है एनिमल्स में. हमें रूल पढ़ेंगे जिसको एलनस रूल्स कहते हैं. मैमल्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स होते हैं शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज. कोल्ड रीजन्स में होते हैं शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज. Mammals from the colder climate generally have the shorter ear limbs and to minimize heat loss, ताकि heat loss ज़्यादा ना हो. It's a morphological adaptation in animals. Morphological adaptation. एलनस रूल बताता है जो मैमल्स होते हैं कोल्ड रीजन्स के उनके एक्सट्रीमिटीज ईयर्स जो लिम्स होते हैं वो होते हैं शॉर्टर टू मिनिमाइज द हीट लॉस. इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक द सील्स हैव द थिक लेयर ऑफ स्किन fat blubber below their skin which acts as an insulator and reduces the loss of the body. It's also an example of a morphological adaptation. Polar areas में एक skin एक layer of thick layer of fat होता है जिसको हम blubber कहते हैं under the skin that acts as an insulator and prevents the heat loss. Blubber, a thick layer of fat. Blubber is actually a thick layer of fat which is present below the skin in the polar animals to minimize the heat loss. ताकि उनमें heat loss ज़्यादा ना हो. Blubber is a thick layer of fat that is present below the skin that acts as an insulator and reduces the loss of the body heat. Mammals from the colder climate generally have the shorter ears and the limbs to minimize the heat loss. This is called as the Allen's rule. Some organisms possess adaptations that are physiological. हमने जो examples पढ़ी पहले हम plants में पढ़ी थोड़ी morphological adaptation, उसके बाद हमने पढ़ी morphological adaptation in the animals. पहले पढ़ी थी physiological adaptation kangaroo rat में. Specific example kangaroo rat में internal fat oxidation की वजह से उनकी water requirements सारी पूरी हो जाती है. Some organisms possess adaptations that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful kind of situation. If you had ever been to a high altitude place greater than the Rohtang Pass near Manali and Leh, you must have experienced altitude sickness. Its symptoms include nausea होता है, fatigue and the heart palpitation, altitude sickness. जब high altitudes पे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, high altitude पे जाते हैं वहाँ पे altitude sickness होते हैं. Altitude में nausea होता है, fatigue and heart palpitation. This is because low atmospheric pressure पे द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है. बट ग्रेजुअली गेट एक्यूमुलेटेड. लेकिन जब हम जल्दी अडेप्ट होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर अडेप्ट होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. किस तरह हमारी जो रेड ब्लड सेल जो
प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, और हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। ये तीन जो फैक्टर्स हैं या तीन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो हम फिर हमें फिर अडेप्ट करते हैं टू लिव एट द हाई ऑल्टीट्यूड्स लाइक द रोथिंग पास इन द मनाली और द लेह. It's an example of physiological adaptation. Physiological adaptation is an example of physiological adaptation में जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं हमारा ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। ऑल्टीट्यूड की किस वजह से होता है क्या क्या होता है इसमें, नोशिया होता है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाता है, फैटीग आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता एट हाई ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द लो प्रेशर। इस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को इंक्रीज करती है। एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिक्रीज करती है एंड हार्ट रेट को, हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। इट्स एन एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल एडप्टेशन। इसके अलावा जो अगर हम प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल एडप्टेशन देखें, इन मोस्ट एनिमल्स सिंपल mammals from the colder climate generally have the shorter extremities to minimize the heat loss. It's called Allen's rule. The in polar seas, aquatic animals, example seals, have a thick layer of fat called as blubber, have thick blubber below their skin, which reduces the heat loss. Some are possessed of physiological, which are the nausea, altitude, nausea, fatigue, and the heart palpitation. Low atmospheric pressure पे altitudes पे enough oxygen does not get enough oxygen by increasing the blood cells, decreasing the efficiency of the binding with hemoglobin, and by increasing the heartbeat rate. In most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow range of temperature. In humans at 37 degrees Celsius, but there are microbes, archaea, bacteria, जिसमें हम पढ़ सकते हैं थर्मल स्प्रिंग्स जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, बट दैट रिफ्लेक्शन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाई टेम्परेचर फॉर एक्सेस 100 degrees. How is this possible? Many fishes thrive in Antarctic waters where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluids from the freezing? Many fishes have. A large variety of the marine invertebrates and the fishes live at great depths to the ocean where the pressure is due to the normal atmospheric pressure that we. How do they live? And the organisms living in such extreme environments show a fascinating area of biochemical adaptation. में होता है biochemical adaptation. सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में एग्जांपल आ जाती है बायोकेमिकल एडेप्टेशन। हमने पढ़ा बेसिक एडेप्टेशन एट्रीब्यूट्स पढ़े हमने, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लाइक आर्चिया, दे आर इन फाउंड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आर्चिया। सेकंड वन इज बहुत से फिशेस होते हैं एंटार्क्टिक वाटर जहाँ पे टेम्परेचर बिलो जीरो होता है, एंड कुछ फिशेज है इन्वर्टेब्रेट मैरन इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं बिलो प्रेशर, बहुत प्रेशर में होते हैं वहाँ पे ग्रेटर देन 10 100 टाइम्स होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें एक पर्टिकुलर टाइप की एडेप्टेशन होती है जिसको हम बायोकेमिकल एडेप्टेशन कहते हैं। पर्टिकुलर टाइप की एडेप्टेशन होती है जिसको हम बायोकेमिकल एडेप्टेशन, इसको अलग से हाईलाइट करेंगे। पर्टिकुलर टाइप की एडेप्टेशन होती है जिसको हम बायोकेमिकल एडेप्टेशन कहते हैं। बायोकेमिकल एडेप्टेशन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, सिंपल लिखेंगे हम एक्सट्रीम हैबिटेट्स। Some organisms show behavioral response to behavioral adaptation. हम पढ़ेंगे behavioral adaptation. Desert lizards lack the physiological ability to deal with the high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone but moves into the shade when the ambient temperature starts increase. Some species behavior की वजह से क्या करते हैं, सन जब होता है तो खुद को बास्क करते हैं, सन बाथ लेते हैं, वहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस cold air. Desert lizard show homeostasis by behavioral means. ये आया था 2021 में क्वेश्चन। Desert lizard show homeostasis or behavioral adaptation. Homeostasis by behavioral means adaptation दिखाता है homeostasis adaptation. Desert lizard show homeostasis by the behavioral means. 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 Population attributes. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them living in groups in well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. Another Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of the individual resulting from even the asexual
A group of the individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. All the cormorants in a wetland, rats in abandoned dwelling, teak wood trees in a forest track, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond are some examples of populations. Population given different depending upon attributes. In nature, we really find isolated single species नहीं हो पाए जाते हैं. बहुत से species पाए जाते हैं in a particular geographic area. फिर potentially वो interbreed करते हैं, potentially interbreed करते हैं, फाइट करते हैं, compete करते हैं for resources, share करते हैं resources को पॉपुलेशन कहते हैं. एक्चुअली इंटरब्रीड का मतलब होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, बट पॉपुलेशन में इंटरब्रीड का मतलब हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं. दोनों के सेक्चुअल भी एसेक्चुअल फॉर स्टडी पर्पस, फॉर स्टडी पर्पस. In earlier chapters, you learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changing environment, it is at the population level that natural selection operates. Natural selection operates at population level. Very, very important point. Natural selection operates at a population level. It is at the population level that the natural selection operates to evolve the desired traits. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. एवोल्यूशन के साथ लिंक करती है पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन इकोलॉजी पहले हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी. इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज आल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. पॉपुलेशन इकोलॉजी पे पॉपुलेशन लेवल पे नेचर सिलेक्शन ऑपरेट करता है, फिर वो डिजायर्ड रेट लेता है, फिर इवोल्यूशन होता है. वो पॉपुलेशन लेवल पे ही इवोल्यूशन होता है. पॉपुलेशन लेवल पे ही इवोल्यूशन होता है. population it is at the population level that the nature selection operates to evolve the desired traits. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics के साथ लिंक करता है. It links ecology with the population genetics and evolution. Ecology with population genetics and evolution, very important. And a population has certain attributes whereas individual organism does not. An individual organism cannot have attributes. Population has certain attributes जिनको हम population attributes कहते हैं, where an individual organism does not. An individual may have births and deaths, but a population has birth rate and death rate. And in a population, these rates refer to per capita births and deaths. The rates hence expressed are change in numbers, increase or decrease with respect to the members of the population. Initial number increased at the initial birth rate. Hence, in reproduction, 8 new plants are added, taking the current population 28. We calculate the birth rates as 8 by 28. Birth rate change by initial. Birth rate का मतलब होता है birth rate या death rate. Birth rate या death rate. Birth rate या death rate. Change होगा increase या decrease या divided by initially कितना, ऐसे मेजर करते हैं डेथ रेट. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन एक पॉपुलेशन के पास होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स. लाइक पहले ही आता है बर्थ रेट. एक पॉपुलेशन के पास होता है बर्थ रेट, डेथ रेट कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू. Another attribute characteristic of a population is sex ratio. An organism can be male or a female, but a population एक मेल या फीमेल नहीं, उनके सेक्स रेशियो होता है. सेक्स रेशियो example, 60% of the population are females and 40% are males. 60% are females and 40% are males. Example, sex ratio. The third attribute is the population age distribution, age pyramid. A population at a given time is composed of individuals of different ages. If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called as the age pyramid. The third attribute is age pyramid. Age distribution अगर हम एक ड्रा करेंगे एक particular population, उसको हम age pyramid कहते हैं. age pyramid. Therefore, age pyramid is another. age pyramid होते हैं तीन तरह के. एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग. एक्सपेंडिंग अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो जाएंगे, इसका मतलब होता है एक्सपेंडिंग प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग ऐसे होगा. ये तो आसान है. स्टेबल होगा ऐसे, ये दो सेम होंगे, ये दो ऐसे स्टेबल. ये होगा एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग. नीचे से अगर ज़्यादा ब्रॉड हो गई, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है नीचे से, समझ इट इज़ स्टेबल. एक्सपेंड हो रहा है नीचे से ज़्यादा एक्सपेंड, ये है डिक्लाइनिंग, ये डिक्रीज ही हो रहा है नीचे से. रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव पोस्ट ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग. जैसे तो पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट द लॉट इन स्टेट्स. ये हम नहीं कर सकते कंप्लीट, आज कल करेंगे हमें कंप्लीट इंशाल्लाह ताला.
The size of the population tells us a lot about its status and habitat, whether ecological process we wish to investigate in the population, be the outcome of the competition.